Good evening everyone. In today's video we will talk about present continuous tense. So what kind of sentences do come under present continuous tense? Sentences those talk about repeated and continuous action, but these actions are temporary. Then we can use present continuous for these kind of sentences. For example, if I say that I am exercising a lot these days, मतलब मैं आजकल बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम रिपीटेडली एक्सरसाइजिंग बट दिस एक्शन इज टेम्परेरी. या फिर यू आर डूइंग समथिंग इन मोमेंट, यू आर डूइंग समथिंग इन प्रेजेंट, आप अभी कर रहे हो, अभी इस मोमेंट में काम कर रहे हो. और यू हैव प्लान समथिंग टू डू इन योर फ्यूचर, then also if you are revealing your plan to somebody, then also you can say you can use present continuous tense. For example, I am throwing a party, I am throwing a birthday party next week. So you are not throwing party at present. आप अभी present में party नहीं दे रहे हैं, आप next week party देंगे, but आप अभी उसको बता रहे हैं कि मैं party दे रही हूँ. हिंदी में भी तो हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं अगले हफ्ते party दे रही हूँ. तो इसी तरह से हम present continuous tense में भी English में बोल सकते हैं. तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. पहली क्या है कि समथिंग इज बीइंग डन इन द मोमेंट, अभी कोई काम हो रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, ठीक है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो दीज वर्ड्स विच आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दीज कम अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. या फिर कोई चीज रिपीटेडली हो रही है अभी कुछ टाइम से, लेकिन वो परमानेंट नहीं है. एंड द थर्ड वन इज कोई चीज नियर फ्यूचर में होने वाली है, तो तब भी आप उसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. तो सेंटेंसेस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव सेंटेंस, मींस समथिंग इज हैपनिंग, कोई चीज हो रही है. जब आप कोई चीज के होने का बताते हैं तब आप यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. कोई चीज अगर नहीं हो रही है तब हम यूज करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस, मैं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ. जो थर्ड टाइप के होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मींस आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन टाइप के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आप क्या करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो होते हैं इज, एम, आर. देन we use main verb यानी कि go, come, verb, ing के साथ हम यूज करेंगे, और फिर हम object का यूज करेंगे. If you guys don't know what subject, verb and objects are, then please go to my channel playlist, and there you will find English Basics playlist. In that playlist, just go to the video with the title Chapter 1. There you will find what subjects, verbs and objects are. So for making positive sentences, we will simply use subject, then is, mr, then verb plus ing, और फिर object. Now we will make positive sentences. Like I am going to school. तो I यहाँ पर is a subject, am is helping verb or auxiliary verb, go is the main verb, and we use ing with the main verb, and school is object here. To here can be considered as adverb, as well as we can consider it as preposition also, but it is adverb here. Then they are coming to my home, they are going to market. In present continuous tense, we always use am with I, and we always use are with plural. Plural means more than one, so we always use are with they मतलब वे, वो लोग, and we मतलब हम, उसके लिए are लगता है. और you is the exception, whether you are talking to one person or you are talking to more than one person, you will always use are. you के साथ हमेशा are लगेगा. you are. जब हम present की बात करते हैं, please keep this thing in mind, जब हम present की बात करेंगे तो I के साथ am लगेगा. present continuous की जब हम बात करेंगे, you के साथ are लगेगा. प्लूरल के साथ भी are लगेगा, और सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ is लगता है. he, she, it के साथ is लगता है.
I am watching tableau on Janmashtami. Tableau means झांकी. My friend is participating in competition. My friend यहाँ पर क्या है, एक friend की बात हो रही है, तो my friend यहाँ पर subject है, participate is the main verb and competition is object here. Then I am throwing a party next week. Look carefully. If somebody is saying that I am throwing a party next week, it means this kind of sentence will get fulfilled in near future. So this is not a present tense kind of sentence, है ना. हम बोल सकते हैं कि present में तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, but आप बोल रहे हैं कि मैं थ्रो कर रही हूँ, है ना, फ्यूचर में. तो I already told you कि इस टाइप की जो sentences है वो भी present continuous में हम यूज करते हैं. She is playing music. Whenever we play any musical instrument, we always use play. जब भी हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसको बजाने के लिए we use the word play. She is playing music, she is playing a flute, he is playing piano, he is playing drums. So we always use the word play. I am celebrating my birthday. Now I will show you some pictures and you have to make present continuous sentences along with me. So she is sleeping. So here when I say she is sleeping, the object is optional. Okay, whenever we make a sentence, the object is always optional in active sentences. Bear is waking up. वो सोकर उठ रहा है. तो wake is the root word और सो के उठ रहा है means waking up. So this is dwarf यानी कि बोना. And he is yawning. वो जमाही ले रहा है. और हमें जमाही कब आती है? When we feel sleepy. तो हम बोल सकते हैं जब हमें नींद आ रही होती है तो हमें जमाही आने लगती है. तो either we can say he is yawning, dwarf is yawning, or we can say dwarf is feeling sleepy. This boy is eating an apple. They or these kids are studying. These girls are playing. These girls are playing with ball. He is running. Now we will talk about negative sentences. In negative sentences, we use not, between, helping verbs means auxiliary verbs and main verb. This is the only difference between positive and negative sentences. Positive sentences में कोई काम हो रहा है, negative sentences में कोई काम नहीं हो रहा है. Or we can say that subject plus is MR, then not, then verb plus ing, and then object will be used. Okay, now we will try making some sentences. I am not going to school. And a positive sentence was I am going to I am going to school. Negative sentence is I am not going to school. They are not coming to my home. So are is the auxiliary verb, come is the main verb. तो उन दोनों के बीच में not लगेगा. I am not watching tableau on Janmashtami. Am is the auxiliary verb, watch is the main verb, and not will be used between am and watching. My friend is not participating in competition. I am not throwing a party next week. She is not playing music. I am not celebrating my birthday. Now we will talk interrogative sentences. When we ask question, it means we are speaking interrogative sentences. It means we are doing interrogation. For our convenience, we will divide interrogative sentences into two types. In type 1, we will start the question with interrogative pronoun, means we'll start the question from what or who, or from interrogative determiner, means from which, or we will start the interrogative sentence from the interrogative adverb, means why, where, how and when. इसका मतलब है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन what, why, when, which,
who या what से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको टाइप ए कैटेगरी के अंदर हमने उसको डाला है। और ये जो मैंने आपके आगे फॉर्मूला लिखा है, द फॉर्मूला विच आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, the formula that is on slide is for the type 1 question, type 1 interrogative sentences. So these kind of sentences we will start from interrogative word, then we will use auxiliary verb, and then we will use subject. It means auxiliary verb will be written before subject, and then we will use main verb with ing and then object. Okay, so what are auxiliary verb which are used in present continuous tense? These are is am are. So only is am are will be used in present continuous tense. Okay, let's try to make some sentences. Like, why am I going to school? Okay, the positive sentence was I am. In positive sentence, am was written after I, but when we are asking question, the am will be written before I. Why am I going to school? Okay, why are they coming to my home? Why am I not watching tableau on Janmashtami? When is my friend participating in competition? Why am I throwing a party next week? How is she playing music? Where am I celebrating my birthday? Now you guys will say that, can I use why I am going to school instead of why am I going to school? No, we can't say. See, if we use auxiliary verb after subject, means like we have used in the positive sentences. अगर हम I के बाद am use करेंगे, they के बाद are करेंगे use, तो वो एक sentence हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम सब्जेक्ट से पहले ही लगाएंगे। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर हमने बोलना है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना, या आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट एम आई डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग हियर। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हो कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप उसको एक तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, आप उसको एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ, है ना। यहाँ पे आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। तो यहाँ पे वी विल यूज कि कांट यू सी व्हाट आई एम डूइंग, कांट यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग हियर आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सामने वाले को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने मुझसे पूछा है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड आई एम रिप्लाइंग कांट यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर। है ना, डिफरेंस समझ आया। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, और अगर आपको बोल रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग हियर, तो ये क्वेश्चन नहीं, ये एक एज अ सेंटेंस काउंट होगा। तो जब आप किसी को सरकास्टिक वे में रिप्लाई करते हैं, उस टाइम पर हम इस टाइप से सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दैट कांट यू सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, कांट यू सी व्हाट आई एम राइटिंग। तो मोस्टली व्हाट यूज होता है, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है यहाँ पे जब भी हम किसी को सरकास्टिक रिप्लाई करते हैं। Now we will discuss about type 2 sentences. In type 2 sentences, we will start the question from auxiliary verb. We will not use interrogative words like who, when, why, there. We will just start the question with auxiliary verbs. In case of present continuous, the auxiliary verbs are is, am, are. It means we will start the question from is, am, are. Then we will use subject. Then we will use verb plus ing, and then we will use object. Object is always optional. Let's try make some sentences. Okay. In type 1, we have written why am I going to school, and in type 2, we have removed why, and I just wrote am I going to school. In second sentence, I have removed why from the third column and just copy pasted are they coming to my home. In third sentence, am I not watching tableau on Janmashtami?
Fourth, is my friend participating in competition? You by yourself can see that in the third and fourth column sentences, the only difference is of the initial word, the only difference is of the interrogative word. Okay. Am I throwing a party next week? Is she playing music? Am I celebrating my birthday? The answer to the question, those are in third column, will always be in words or in sentences, but the answer to type 2 question can be given in yes or no, means can be given in Boolean. So that's all for today. If you have any confusion regarding the video, then you can comment in the comment section below. If you like this video, then please don't forget to share and like this video, and don't forget to subscribe my channel. Have a great day.